Am I audible? Mr. Satya Prakash, am I audible? Mr. Tinku Kumar, am I audible? Anyone? Yes, you are audible. Okay, then. Hello. Yeah. Okay, we will wait for others. Okay, we will wait for next 5 minutes. Then we will start. Okay. Sure. Yeah, sure, sir. Okay, we're gonna start. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Okay, so we're gonna start our session. Okay, so today's session is we're gonna analyze, we're gonna learn about the remote access Trojan, that is also called as rat malware. Okay, so before that, the rat is exactly okay. English is good or Hindi? Mr. Rahul and Satya, are you Hindi, sir. comfortable? Hindi? Yes, sir. ठीक है. सो हमारे पास rat.unknown.exe फाइल है. ठीक है. अब हम इसके ऊपर एनालिसिस करके देखेंगे बेसिकली एक जो रैट होता है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन होता है, बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी किस टाइप की होती है, ये कोशिश करेंगे हम जानने की. ठीक है. ठीक है. सो बिफोर रन दिस मालवेयर, ठीक है, इसको रन करने से पहले हम पहले इसको रीनेम कर लेंगे. ठीक है. एंड सो ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा अगर किसी भी रैट या कोई भी मालवेयर या कोई भी सैंपल्स के ऊपर आप एग्जीक्यूटेबल सैंपल्स के ऊपर आप वर्क करना चाहते हो, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, एग्जीक्यूटेबल टाइप का. एग्जीक्यूटेबल इन द सेंस वो रन होगा एज अ सॉफ्टवेयर. ठीक है. अब हमारे मालवेयर एनालिसिस पे हमारे पास 3 टाइप की प्रोसेस होती है. फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज डायनेमिक एंड थर्ड इज हाइब्रिड, which is called as we can say the automation and the sandboxing. But
हम उस पर ज्यादा रिलाय ना होके हम डायनेमिक को और डेप्थ में या और मैनुअली हम करते हैं, ठीक है। सो स्टैटिक हमारा क्या होता है बेसिकली, स्टैटिक पे हम हमारे जो रेड डॉट अननोन है, एक सैंपल है, ठीक है। हम इसको विदाउट ओपन करके जितनी भी इससे इंफॉर्मेशन हम गेन कर सके वो देखेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है और इसमें स्ट्रिंग्स है, तो हम होस्ट बेस्ड और नेटवर्क बेस्ड स्ट्रिंग्स पे ज्यादा फोकस रखेंगे एज कम्पेयर टू दी अदर इंफॉर्मेशन। ओके, सो इन स्टैटिक वी गोना यूज पी स्टूडियो और पी आई डी, और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, हम आईडा भी यूज कर सकते हैं, कटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो वी गोना डू द एनालिसिस ऑन पी स्टूडियो। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे पी स्टूडियो है, मैं सिंपल पी स्टूडियो को रन करूंगा एंड देन आफ्टर दैट सिंपली नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप करा। ओके, लेट इट काउंट फर्स्ट। ओके, इट गोना टेक सम टाइम। अगर पी स्टूडियो टाइम ले रहा है बहुत सारा, देन वी कैन ट्राई अनदर टूल दैट इज फ्लॉस, ठीक है। अब now you guys might be thinking about what is floss and what is these tools exactly are going to do. Okay, so उससे पहले मैं mention कर दूं let it complete first. So हमारे पास एक टूल है which is called as flare VM, ठीक है। फ्लेयर वीएम पे आप सबको सारा टूल्स मिल जाएंगे, वहां से सारे टूल्स, ठीक है। फ्लेयर वीएम को आप जब डाउनलोड करोगे तो वो खुद ब खुद आपके लिए एक एटमॉस्फेयर सेटअप कर देगा मालवेयर असिस्ट के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एक फ्लेयर फोल्डर दिख रहा होगा, सिंपली ओपन दैट, यू गोना फाइंड आउट देयर आर बंच ऑफ अदर टूल्स। ओके, डिबगिंग के लिए है हमारे पास, एंड्रॉइड के लिए है, डेवलपर टूल है, डिसेंबलर है, देन बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट इन दिस सेशन, वी गोना यूज दैट यूटिलिटीज टूल्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे बहुत सारे टूल है, एपीआई लॉगर रहा, CFF रहा, यहाँ पे बहुत सारे, दीज आर आल्सो गोना हेल्प अस इन डूइंग द स्टैटिक एंड डायनेमिक फॉर एनी काइंड ऑफ दी सैंपल। इट कैन बी द पीडीएफ भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकती है, इट कैन बी वीडियो फाइल, MP3, इट कैन बी दी एग्जीक्यूटेबल फाइल, और इट कैन बी द जिप फाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में और किसी भी सॉफ्टवेयर और किसी भी फाइल के साथ वायरस एम्बेड होके आ सकता है। सो दीज आर द टूल्स गोना हेल्प अस, ठीक है। सो अगर जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो दीज दैट प्लेटफॉर्म इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एज यू कैन सी द पी स्टूडियो ने गेन कर लिए, यहाँ पे स्ट्रिंग्स आ गए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है। ओके, सो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल MD5 रहा हमारे पास, SHA-1 रहा, SHA-256 रहा, राइट। सो दीज आर द यूनिक फिंगरप्रिंट, वी कैन से दैट, ठीक है, ये यूनिक फिंगरप्रिंट्स हो गए स्पेशली फॉर दैट red डॉट unknown डॉट exe, ठीक है। तो एक यूनिकनेस है, हम सिंपली वायरस टोटल को भी यूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ये फाइल मिलीशियस है या नहीं है, इसके साथ कुछ इसके साथ कुछ नहीं, इसमें कुछ मिलीशियस एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली वायरस टोटल पे जाके यहाँ से कॉपी वैल्यू करो, then you have to paste on the virus total, then it will show like okay that is the malware or not, simple. Okay, and okay, in this we get the MZ extension, MZ, that is also stand for executable file, and it indicating हाँ कि executable file है exe file which is gonna run as a software, we can say that. Okay, script है इसके साथ, ठीक है। So next we gonna note down, okay, the entropy is 6 point something. Okay, so this is also indicator, okay, packed नहीं है, I hope you guys know what is packed or not packed. I'm just gonna give you a small definition what is packed and not packed. अगर packed file होती है that mean it containing more than 2 stages inside. Stages means वायरस के stages होते हैं, ठीक है। पहला स्टेज जो ये हमें दिख रहा है, ठीक है, अर्ली इन्फेक्शन बोल सकते हैं हम, कुछ भी, ठीक है। देन ये क्या करेगा, रन होगा, फिर रन होने के बाद अगर ये कुछ ड्रॉप कर रहा है या कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज द सेकंड स्टेज। और कुछ भी पीस ऑफ अनदर पीस ऑफ सैंपल अगर ये ड्रॉप कर रहा है खुद का, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये पैक्ड है। और यहाँ एंट्रोपी से क्लियर हो जा रहा है कि दिस इज नॉट पैक्ड बिकॉज
अगर एंट्रोपी 6.9 के अबव है दैट वी कैन कॉल दी पैक्ड। ओके, क्लियर है ना मिस्टर राहुल एंड सत्या? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। ओके। पूछना सर, थोड़ा पूछना था, फ्लैर कैसे किया आपने, फ्लैर कैसे इंस्टॉलेशन किया है? व्हाट इज फ्लैर? फ्लैर के बारे में थोड़ा बताइए ना। Flare is a kind of a tools that allow us to install so many tools for analysis. Okay, so Flare install करने के लिए आप GitHub से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्लेयर VM डाल के फ्लेयर मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ में गया? क्लियर हुआ? गिटहब से बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके ओके, तो सो what extra what extra information we can get from this sample? Okay, so it is showing this file type that is executable, and it's also showing the architecture of that sample. It is for the 64-bit, right? So what does that mean, 64? That it mean that is only rely on 64-bit. It won't run on the 32. Okay. Okay, so okay, next we have the architecture which is 64-bit, right? 64-bit architecture हमको indicate कर रहा है that is only gonna run on the 64-bit, not in the 632. Okay, so यहाँ से clear हो गया? That is a subsystem we can see. Okay, that is the GUI. Okay, that's pretty good. And after that we have the compiler stamp, and that shows the compile time क्या है इसका, compile time. So यहाँ पे show कर रहा है that is compile time is 2021 and in September. Okay, and with the time. So ठीक है, that is not that much informative information. Okay, so we can also neglect that thing. Okay, so the most important thing, we're gonna look in the strings, which is gonna be most reliable or more effective for the analysis for this sample, right? So let's, before that we're gonna look for the indicators. We have simple things here we can see, and there are a lot of information from here, and we just gonna try to gain the host based and network based indicators. Okay, and you guys might be thinking what is the host based and host based and network based indicators? Okay, so होस्ट बेस्ड इंडिकेटर्स क्या होते हैं? होस्ट बेस्ड इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं कि कोई फाइल सिस्टम में क्रिएट हो रही है या डिलीट हो रही है या डाउनलोड हो रही है और स्टोर हो रही है, दैट इज होस्ट बेस्ड इंडिकेटर। सो होस्ट बेस्ड इंडिकेटर दिखाई कैसे देखते हैं? कोई पाथ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐप डेटा करके, या फिर सी विंडोज सिस्टम 32 के अंदर जाके सेव हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दी होस्ट बेस्ड इंडिकेटर्स लुक्स लाइक। ओके, अब नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर्स लॉजिकली सोचना है हमें। ठीक है, लॉजिकली ही सोचना है कि होस्ट नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर किस टाइप से होगा। नेटवर्क बेस्ड इफ यू सॉ, और नाम से क्लियर हो रहा है नेटवर्क बेस्ड। सो अगर नेटवर्क से रिलेटेड अगर कोई भी नाम आपको दिखता है, फॉर एग्जांपल नेटवर्क, ओके, इट गोना यूज सम नेटवर्क, सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हाँ ये फाइल नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर यूज करने वाला है। ओके, एंड व्हाट एल्स वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम, okay, the other things are seems not that important because the ASLR is off, and the DEP is also off, which is gonna help us। ठीक है, ये help करने वाला है मैं। And these are the things we will discuss in next session in depth, because these contain a lot of information and I can't explain in just 1 hour। so directly हम jump करते हैं strings पे। ठीक है, so ये वाली स्ट्रिंग से पहले मैं जंप करना चाहूंगा फ्लॉस टूल पे, बिकॉज फ्लॉस टूल हमारे लिए क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ठीक है, सारी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो हमको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ठीक है, ओके, सो let me just clear, we are examining on that red dot or node। ठीक है, एक सैंपल है हम उस पे कर रहे हैं, और उससे हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करी है, बिना एग्जीक्यूट कराए कर रहे हैं। रिमेंबर, सो बिना एग्जीक्यूट कराए हमें कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं, विच इज पी स्टूडियो। ठीक है, पी स्टूडियो हमें प्रोवाइड कर देता है।
ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और टूल है फ्लॉस, ठीक है। सो वी गोना यूज सम फ्लॉस कमांड्स, लेट मी जस्ट, okay, wait, okay, so I'm gonna type flaws.exe and then the file name, let me just wait, ls. So this is the file we're gonna examining. So simple flaws flaws.exe space and then the file name, ओके, एंड देन द ग्रेटर देन का साइन। अब जिस भी नाम के साथ आप सेव करना चाहते हो डेस्कटॉप पे, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक राहुल डॉट टीएक्सटी में सेव करा देते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा, एंटर मारेंगे, सो यू कैन सी हियर राहुल के नाम से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो रही है। सो ये टूल क्या कर रहा है, बेसिकली हेल्प कर रहा है हमें, जितनी भी सारी ये स्ट्रिंग दिखनी है 13,691 स्ट्रिंग, ये हमें इसके अंदर स्टोर करके दे देगा, ठीक है। अब हम यह क्या करेंगे, यहाँ से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, होस्ट बेस्ड और नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। अब वो जो होस्ट बेस्ड और नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर्स से बहुत हेल्प करने वाले हैं ये जो भी मालवेयर है, राइट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन को एग्जामिन करने के लिए हेल्प करने वाला है। ओके, सो लेट इट कंप्लीट फर्स्ट। सो मिस्टर पवन एंड राहुल, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. Okay, we are done. So we can minimize that thing. We also can minimize the RP Studio. Okay, we're gonna just simply gonna open that text file and we can see we capture these strings in text, right? So now the fun part is we can find out directly with saving some times, or let's say मैं होस्ट बेस्ड इंडिकेटर्स होता है एक .exe फाइल ढूंढते हैं, .exe दैट इज आल्सो नोन एज, अगर .exe स्ट्रिंग्स के अंदर है तो शो करेगा। मैं .exe क्यों सर्च कर रहा हूँ, बिकॉज होस्ट बेस्ड इंडिकेटर्स के अंदर आता है, अगर ये सैंपल कुछ ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, सेकेंड स्टेज, तो .exe अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो नहीं शो करेगा। सो आई एम गोना ट्राई टू फाइंड दैट। ओके, सो आई एम गोना डू, and for the first hit we get exe as you can see here. So हाँ, यहाँ पे हमें बहुत कुछ मिल जाता है। let me just cancel this. okay, okay, before that, so यहाँ पे दिख रहा है ना, connect, send, select, get, handle, host name, सबको शो हो रहा है। So that is trying to correct something, try to send something, select something, and get is the रिक्वेस्ट, वेब बेस्ड रिक्वेस्ट। आपने अगर देखा होगा कि जब भी कोई वेबसाइट आप ट्राई टू सर्च और कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो बैकग्राउंड में हमारे पास अपने वर्ब सूट के अंदर अपने कैप्चर करी होगी कोई वेबसाइट या फिर हाँ वेबसाइट को, तो वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, दैट मीन यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग। सो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हाँ ये नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर यूज कर रहा है, ठीक है। सो पहला क्या था हमारा, हमने exe सर्च करा, हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल गई विच इज नेम एज mscore.dll.exe। सो हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करके रख लेंगे, ठीक है, नोटबुक में वेरेवर यू वांट, ठीक है। exe फाइल मिल गई। अब हम आसपास देखेंगे कि हमें और क्या मिल रहा है। यहाँ आसपास क्लियरली प्लेन टेक्स्ट में हमें दिख रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे हमें लेट्स से okay, we can see the message box. Okay, so there is a message box and we don't know what that kind of strings actually trying to tell us, ठीक है। हमको नहीं पता चला कि मैसेज बॉक्स, बट हमें पता चला कोई मैसेज बॉक्स बता रहा है, दैट वी कैन आल्सो थिंक लॉजिकली कि हाँ कुछ ना कुछ मैसेज बॉक्स पे आने वाला है अगर हम रन कराएंगे तो मालवेयर को। ओके, एंड what command can I run for you, that is also a suspicious thing कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ कमांड पूछ रहा है रन करने के लिए। so that might be a maybe a reversal, take the reversal and asking someone or its origin, okay, I'm connected, so what you want me to do, like that thing
We can say that if you are really malware analysis, then you can identify and understand those things very easily. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास दिख रहा है ऑनलाइन. ओके, इट इज सेज ऑनलाइन. सो आई डोंट नो व्हाट इज ऑनलाइन मीन, बट मे बी ट्राइंग टू, और इट इज showing that connection online, or it's showing some files online. Okay, that file is now online. Now you can do whatever you want. Now the next we have the very clearly weird text, which is no soup for you. Funny. Okay, so I don't know what that mean, but we're gonna take this also. I can't relate this because it's logic नहीं बनता. No so for you, that mean it's okay. Let me just connect the logic with that. Might be it's saying okay, यहाँ पे कुछ नहीं है, आप जा सकते हो. Maybe ये मतलब हो सकता है, but it is showing some. Oh yeah, okay. So it is also maybe trying to show no so for you in message box, or what command can I run for you in message box. Okay, that is, we can relate this thing. Yes or no, guys? Pawan, Rahul, Satya, are you able to understand? यस सर, समझ में आ रहा है, पर थोड़ा सा ना मुझे, अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कि अभी तक क्या हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे और आइडिया हो जाएगा. ओके ओके, ठीक है ठीक है. सो हम rat dot unknown, और we don't know and we not sure about the sample. ठीक है, मैंने एक यहाँ पे एक rat sample लिया मालवेयर का, which is called as the remote access trojan. okay, हम इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक है, अब इसको एनालिसिस करने के लिए हम इस पे अपनी प्रोसेस लगाएंगे स्टैटिक डायनेमिक. ठीक है, अब स्टैटिक हमारा क्या होता है, स्टैटिक पे हम क्या करते हैं, विदाउट एग्जीक्यूटिंग इसको ओपन नहीं करेंगे. विदाउट एग्जीक्यूटिंग हम इससे जितनी भी चीजें हो सकती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, वो हम गैदर करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो फॉर दैट थिंग वी हैव अ पी स्टूडियो टूल. ओके, पी स्टूडियो टूल डाउनलोड कर सकते हो. अब जब आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, देन इट विल शो यू दैट काइंड ऑफ द पेज. ठीक है, इस तरह का पेज आएगा. सो MD5 शो कर रहा है, विच इज फिंगरप्रिंट फॉर दैट फाइल. ये जो red.unknown.exe इसका फिंगरप्रिंट है और हैशेस है. ठीक है, डायरेक्टली आपको वायरस टोटल पे आप इसे सर्च कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं सस्पिशियस है या नहीं है. यहाँ पे एक चलो फन पार्ट बताता हूँ. सम टाइम यू नॉट एबल टू फाइंड आउट कि हाँ मिसलीनियस है या सस्पिशियस या वायरस टाइप है या नहीं है. ठीक है, डजंट मीन कि वो मालवेयर नहीं है. वो मालवेयर हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि न्यू टाइप का मालवेयर हो. ठीक है, सो we're not gonna rely on just the virus total platform or other. so हमको मैनुअली देखना पड़ेगा बेसिकली क्या चल रहा है इसके अंदर. ठीक है, सो यहाँ पे फिर हमने देखा था MZ एक्सटेंशन दिख रहा है, फर्स्ट बाइट टेक्स्ट, विच इज इंडिकेटिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल है. यहाँ पे हमें रिकन्फर्मेशन मिल गई, फाइल टाइप एग्जीक्यूटेबल है. ठीक है, अब यहाँ पे एंट्रोपी पता चल रहा है, विच इज इंडिकेटिंग इट इज पैक्ड और नॉट पैक्ड. अब 6.9 के अबव है, दैट मीन दैट फाइल इज पैक्ड. पैक्ड मीन्स मोर देन सेकंड स्टेज इट कंटेनिंग, इट इज पैक्ड. पैक्ड मीन्स कि हाँ कुछ और स्टेजेस हैं इसके अंदर. ठीक है, मोर डिसऑर्डरनेस दिखाता है, हम बोल सकते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा डिसऑर्डरनेस चल रहा है. ठीक है, अब एग्जीक्यूटेबल यहाँ कंफर्म हो गया. आर्किटेक्चर 64 बाइट है, दैट मीन इट इज ओनली फॉर 64, नॉट फॉर द 32. सब सिस्टम हो रहा है GUI है. ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड द कंपाइलर जब बना था, ये जो कंपाइल हुआ था उसकी डेट एंड टाइम है. ओके, the next thing, we are familiar with the, let's forget about the indicators and all those things, because ये सब एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल टेक मोर देन 3 to 4 hours आई गेस. ठीक है, सो वी डायरेक्टली विल जंप ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज स्ट्रिंग्स. अब यहाँ पे 13,691 स्ट्रिंग है, सो वी कांट एनालाइज वन बाय वन, राइट. सो इसके सब्स्टिट्यूट पे हमारे पास है एक फ्लॉस टूल. ठीक है, अब फ्लॉस टूल से हम सर बेसिकली क्या, सर, हाँ. एक क्वेश्चन है मेरा कि यही चीज हम वायरस टोटल पे भी तो कर सकते हैं, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? मतलब कुछ स्टैटिक का आपने जो बताया वो मैनुअल हम इसमें करते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, डिफरेंस ये है कि वायरस टोटल एक प्लेटफॉर्म हो गया. ठीक है, अब वहाँ पे एक आपको हैशेस मिल जाएंगे. ठीक है, स्ट्रिंग्स में भी आपको ना मिल पाए, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. फॉर एग्जांपल वायरस टोटल पे इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज हुई है, राइट. व्हेन आई एम सेइंग द लाइब्रेरीज, ये लाइब्रेरीज मिल जाएंगी. ठीक है, बट मैनुअली जो चेक होता है ना, टेस्ट डायनेमिक और स्टैटिक में, वो बेसिकली हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब वो करने के लिए थोड़ा हमें स्मार्टली थिंक करना पड़ता है, बिकॉज वायरस ट्यूटर पे हमें हेल्प मिल जाएगी, नो डाउट, बट वी आल्सो नीड टू बी श्योर फॉर आवर एंड. हमारे अपनी तरफ से भी श्योर होना पड़ेगा ना.
दैट वी आर वायरस टोटल पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है वो एग्जैक्टली है या नहीं है। ओके ओके सर, फाइन। ठीक है। सो डायरेक्टली वी विल जंप ऑन दी स्ट्रिंग्स एंड एक बार एक एक करके तो 13,691 तो हो नहीं सकता है। सो हमने फ्लॉस टूल यूज करा है, एक टेक्स्ट फाइल में सेव करा लिया है सारी स्ट्रिंग्स, राइट। एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द होस्ट बेस एंड नेटवर्क बेस इंडिकेटर। एंड होस्ट बेस एंड नेटवर्क बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। होस्ट बेस की कोई भी हमें पाथ मिला या फिर कोई भी फाइल क्रिएट हो रही है, फाइल क्रिएट इन द सेंस कोई भी .exe डाउनलोड होकर कहीं सेव हो रही है, ठीक है। दीज आर कुछ भी फाइल रीड और राइट हो रही है, दीज आर दी होस्ट बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। एंड नेटवर्क बेस इंडिकेटर बहुत क्लियर है। नेटवर्क बेस यहाँ पे हमें दिख रहा है कनेक्ट कर रहा है, कुछ सेंड कर रहा है, मे बी इट सेलेक्ट समथिंग, इट इज गेटिंग समथिंग एज आई एक्सप्लेन बिफोर। And yeah, HTTP also known as the network based indicators। URL अगर हमें मिलता है तो network based indicators, right? So we are trying to find out those things, so we need to be smart and we need to be analyze those things very smartly। so time ज्यादा वेस्ट ना करके हमने सीधे क्या करा, फ्लॉस टूल यूज करा है, फ्लॉस टूल यूज करा हमने। एंड हमने क्या करा, एक्सट्रैक्ट कर लिया rahul.exe के नाम से एक फाइल यहाँ पे। ओके अब इसमें हमें सारी स्ट्रिंग्स मिल गई हैं एंड एज यू कैन सी है। एंड सिंपली हमने कंट्रोल F करके हमने फाइंड आउट, सॉरी कंट्रोल F करके हमने यहाँ से फाइंड आउट करा .exe फाइल है तो हमें कहीं भी दिखा देना, ठीक है। 13,600 जितनी भी स्ट्रिंग्स है उसके अंदर अगर इस नाम से कोई फाइल हुई तो ये हमें शो कर देगा, विच इज ये हमने देख लिया यहाँ पे कि हाँ है। तो यहाँ से हमें एक पता चल गया कि ठीक है, यहाँ पे हमें एक और सेकेंड स्टेज पता चल गई है मालवेयर की, विच इज नोन एज mscore.dll.exe। ये इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रिंग, इसका हम स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब हमने बात करी थी यहाँ पे और क्या मिल सकता है हमें आसपास, हमने देखा तो हमें मैसेज बॉक्स दिखा, व्हाट कमांड कैन आई रन फॉर यू ये दिखा, हमें ऑनलाइन दिखा, नो सूप फॉर विच इज नॉट अ कॉमन थिंग, वेरी अनकॉमन थिंग है कि यार ऐसे कौन लिख सकता है नो सॉफ्ट फॉर यू। एंड वी नीड टू थिंक इन पर्पस ऑफ लाइक हैकर, लाइक ओके अगर है तो कोई पर्पस है यहाँ पे, ठीक है। and now we can see the user agent name http, which is our the network based indicators। and if we look ahead, we have the https, which is also indicating that is network based indicators, http 1.1 also indicating it have the some using or trying to reach the http url, or I guess DNS. Okay, so we have some connection keep alive, okay, that is making some connection alive, and it is connection maybe http 1.1 related, okay. And okay, we have another exe msd codelib.exe, okay, so we're gonna note down these things. And see, we have the another the path which is on host based indicators। we're gonna check if any file drop here, ओके हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्या ड्रॉप हो रहा है, इट माइट बी ड्रॉपिंग समथिंग दिस और दिस। तो सर अभी हम जो इसमें फोकस कर रहे हैं, जो भी EXE रिलेटेड फाइल्स हैं उसमें फोकस कर रहे हैं जहाँ पे हमारा वायरस हमारा अटैक कर सकता है। नो बेसिकली हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं होस्ट बेस और नेटवर्क बेस इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अभी हुए नहीं है, जब हम रन करेंगे तो माइट भी ये जो इंडिकेटर्स है ना ये अप हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमें सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है जब हम डायनेमिक करेंगे तो हम कंफर्म है कि हाँ ये फाइल एग्जैक्टली यहीं पे ड्रॉप कर रहा है, देन आफ्टर दैट वी विल हम अपनी रिपोर्ट में वो लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि हमने एक सिग्नेचर कंफर्म कर लिया है एंड वी नीड टू मेक आवर रिपोर्ट टू सेंड आवर we can say the programming team or programmer or developer team or the senior level team like a forensic, okay, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्लियरली एक URL दिख रहा है http serve.ec2102.local, ठीक है, इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। एंड व्हाट एल्स वी कैन ट्राई टू सर्च, वी ट्राई टू विल सर्च सॉकेट, लेट्स सर्च द सॉकेट। सॉकेट पता है ना सबको, सॉकेट पता है ना सबको गाइस, विश्वजीत, पवन, राहुल, सत्या। सर बता दीजिए एक बार थोड़ा सा। नहीं सर। सॉकेट होता है बेसिकली एक पर्टिकुलर वी कैन से द सॉकेट नंबर लाइक 8080 व्हाट काइंड ऑफ द सॉकेट इट्स यूजिंग, वी कैन से ओके
इन नॉर्मल लैंग्वेज पोर्ट टाइप का, ठीक है। अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ओके, सो इट हिट द सॉकेट डॉट नेम, सो इट इज ट्राइंग टू ओपन, और जो भी कनेक्शन रिसीव होगा पर्टिकुलर सॉकेट पे होने वाला है, पर्टिकुलर पोर्ट पे होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ से हमें बहुत सारे सॉकेट दिख रहे हैं, दैट मीन इट इज गोना ट्राई टू यूज ऑफिस, ऑफ कोर्स सॉकेट सॉकेट ही यूज करने वाला है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, यहाँ से ये क्लियर हो गया सॉकेट यूज कर रहा है। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग पता है किसी को? एक्सेप्शन हैंडलिंग, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एरर को हैंडल करना। सो इट आल्सो हैव सम फंक्शनैलिटी ऑफ द एक्सेप्शन। स्ट्रिंग हम एनालाइज कर रहे थे, स्ट्रिंग में हमें मिल रहा है, ठीक है, एक्सेप्शन हमें मिल रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मिल रहा है, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है, कि हाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है। एंड व्हाट एल्स, यूजर एजेंट, लेट्स सर्च द यूजर एजेंट, वेट, okay, okay, we don't have the username, I mean user agent, okay, user agent हमने फाइंड आउट करा था नेम से, राइट, नेम से सर्च करा था हमने, डॉट नेम, या डॉट नेम, नेम हमारा यूजर एजेंट है हमारा यहाँ पे, ओके, ठीक है, नेम यहाँ से कंफर्म हो गया। एंड व्हाट एल्स वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट, एचटीटीपी हमें मिल चुका है, एचटीटीपी भी सर्च कर सकते हैं हम, एचटीटीपी, सो एचटीटीपी भी हमारा कंफर्म हो गया कि हाँ ठीक है, ये कुछ वेबसाइट और यूआरएल रीच करने वाला है थ्रू द इंटरनेट, ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन बनने वाला है, ठीक है। सो ये सब सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, ठीक है, नोट डाउन हम कर लेंगे बेसिकली सबको, ठीक, नोट डाउन करने के बाद फिर हम जंप करेंगे डायरेक्टली अपने डायनेमिक पे। बिफोर दैट डायनेमिक आप लोगों को एक आइसोलेटेड लैब प्रिपेयर करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अब आइसोलेटेड लैब कैसे प्रिपेयर करते हैं, दैट आल्सो वी गोना डिस्कस इन अनदर सेशन, बिकॉज इट गोना आल्सो टेक लाइक आई गेस 30 to 40 minutes, okay, so आइसोलेटेड लैब प्रिपेयर करने के बाद, फॉर एग्जांपल I have the Windows 10 and Kali Linux, right? So you guys need two operating system, which is using Kali Linux and Windows 10, okay? So ये है काली हमारा स्निफिंग मशीन की तरह कर वर्क करेगा, और ये हमारा विक्टिम की तरह वर्क करेगा, ठीक है। सो हम मालवेयर इसमें रन कराएंगे और यहाँ से हम स्निफ करके देखेंगे बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन, और एक लोकल, नॉट लोकल, एक फेक इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, ओके, ठीक। सो before that we're gonna set up our things, let me just close that thing, and also this we have frost, okay, gonna close, we're gonna keep this strings file, and we have the process monitor tool, which is really important tool for the malware analysis, ये हमें बहुत कुछ बताता है, फिल्टर करके देता है, ठीक है। सो टूल पे हम बेसिकली, जब आप इस टूल को यूज करोगे, बेसिकली आप पढ़ सकते हो, गिटहब पे पढ़ सकते हो इसके बारे में कि हाँ कैसे कैसे यूज करना है। सो दिस की इज फॉर द स्टॉप प्रोसेसिंग इवेंट्स, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो गया, जब मैं इसे प्ले करूंगा तो बेसिकली इट विल रन, सो इट विल कैप्चर द व्हाट प्रोसेस इज एक्चुअली गोइंग ऑन, ठीक है। सो फॉर दैट वी डोंट नीड दिस, बिकॉज वी नीड अ स्पेसिफिक फाइल नेम जो हम रन करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, जब रन कराने से पहले आप लोगों को एक स्नैपशॉट लेना पड़ेगा अपने फ्लेयर वीएम में, ठीक है। ये सब जो आप सेटअप करोगे, एक फ्लेयर वीएम में आपको लैब बनानी है, एक आइसोलेटेड नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये मालवेयर हमारी ये लैब से एस्केप करके तुम्हारे मेन में ना जाए, मेन मशीन में, विच इज नॉट अ गुड आइडिया, और अगर ऐसा हुआ देन यू आर इन ट्रबल, ठीक है। सो एक आइसोलेटेड लैब प्रिपेयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन we have the filter, we're gonna filter something, we're gonna filter actually a name, so we're gonna drop down, we're gonna look for the process name, and okay is, and we're gonna take this file name, copy, and let's paste this thing, we're gonna add this thing, okay, add and apply, and okay, okay. Now we're not gonna run this time, we're gonna look in, we're also gonna set up our Kali, okay. So let me just close this, right, nothing, okay, okay. Let me just close this, okay, wait, terminal, okay, let me just open the terminal. So we have the another tool which is inet sim, fake internet है, एक तरह से एक fake internet provide करवा देता है, ठीक है।
जिससे कि उस मालवेयर को लगेगा कि हाँ भाई मैं एक फेमिलियर एनवायरनमेंट में एक इंटरनेट भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो वो सोचेगा कि हाँ इट्स अ गुड एनवायरनमेंट, इसीलिए मैं बना था। एक्सप्लोड आई मीन, हाँ, नाउ इट्स टाइम टू वर्क, वो मतलब फैलने लगेगा, अपनी प्रोसेस रन करने लगेगा, ठीक है। हाँ, उससे पहले बिफोर दैट वी नॉट गोना रन दिस, लेट्स ट्राई विद द विदाउट इंटरनेट, ओके। इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, लेट्स ट्राई दिस थिंग एंड वी गोना कैप्चर दिस थिंग। स्टार्ट हो गया यहाँ पे कैप्चर, एंड लेट्स रन दिस थिंग, रन डायरेक्टली, ओके। ओके, सो एज यू कैन सी है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ उसी red.unknown.exe के नाम से ही फाइल प्रोसेस हमें जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हो बंच ऑफ एपीआई कॉल्स हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। सो बेसिकली सिर्फ हम एक ही प्रोसेस को टारगेट करके उसकी सारी प्रोसेस मॉनिटर में देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि प्रोसेस मॉनिटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फिल्टर यूज कर सकते हो, फिल्टर में आपको बहुत सारे ऑपरेशंस मिल जाते हैं जो आप देख सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इससे, ठीक है। सो इसने हमें दे दिया, बेसिकली रन हो गया completely. नाउ द इम्पोर्टेंट एंड द interesting thing is no soup for you, which we already find out in our strings. If we can see, it's look like a message box, as you guys can see. Let's say no SOUP for you, not you. You. Okay, it's a capital one. Okay, down let me. Okay, so यहाँ पे आप देख रहे हो ना, no soap for you, which is familiar. No soap for you, no soap for you, which is इंडिकेशन हमने एक जो होस्ट बेस्ड इंडिकेटर था वो कंफर्म करा है। सो व्हाट वी नीड टू डू एज अ मालवेयर एनालिसिस्ट, वी नीड टू टेक दिस स्क्रीनशॉट, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट में ये ऐड करना है हमें, ठीक है। अब ये मैसेज बॉक्स आया, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक कोई ना कोई मैसेज बॉक्स, सो दिस इज व्हाट द मैसेज बॉक्स वी गेट, और उसमें लिखा है नो सोप फॉर यू। सो यहाँ से क्लियर हो गया कि व्हाट कमांड कैन आई रन फॉर यू स्टैंड फॉर एक रिवर्स सेल देने वाला है, यहाँ से ये क्लियर हो गया है, ठीक है। सो हमने इंटरनेट ऑन नहीं करा है, तो इसने एक नो सोप फॉर यू मीन्स एक एरर टाइप का दे दिया है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं रन होता, मैं कर लो जो करना है, ठीक है। सो इट्स नॉट रनिंग, so let's clear this thing, okay। Now this time we're gonna try to connect with the internet, so we have a tool, okay। So sudo inetsim, inetsim एक टूल है, फेक इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, हो गया ना। अब लेट्स चेक और okay, let me just try some URL, okay। So it shows index, okay, and we are connected, we are pretty connected with our system, okay। So okay, just give me guys just a second, let me just revert this thing, okay, because it says failed a connection, okay, just give me just 2 seconds। Okay, now we I think good to go. Let me just trying to open something, and we're gonna search anything. Let's search pawan.com, okay, and we have to set up that inet sim, okay। हमको inet sim सेटअप करना पड़ेगा, ये वाला जो टूल है जो मैंने आपको शो करा था, ओके, inet sim, इसको हमें सेटअप करना पड़ेगा। और सेटअप जब करेंगे तो ये हमें एक रिस्पॉन्स देने लगेगा इंटरनेट पर, कुछ भी हम सर्च करेंगे तो inet सिम ही रिस्पॉन्स करेगा हमें, कुछ भी हम सर्च करेंगे, ठीक है। दैट मीन द फेक इंटरनेट इज वर्किंग, ओके ओके, वी आर गुड टू गो। एंड वन मोर थिंग वी गोना डू, वी गोना
run the Wireshark. We're gonna try to capture some packets, and we're gonna try to gain like what is exactly going on. So, okay, the capturing start already. Okay, fine. ठीक है, inet sim run है हमारा, Wireshark run है. Okay, सर now फेक इंटरनेट का यूज सिर्फ अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हो गया ना? नहीं, फेक इंटरनेट एक ब्लफ करने के लिए हो गया. फॉर लेट मी जस्ट शो यू. फेक इंटरनेट क्या कर रहा है, हमें एक फेक डीएनएस प्रोवाइड कर दे रहा है, राइट. फेक एसएमटीपी प्रोवाइड कर देगा, फेक एफटीपी एचटीटीपी पोर्ट 80, ये सब फेक प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि उस मालवेयर को लगे कि हाँ सारे पोर्ट ओपन है, ठीक है, इंटरनेट चल रहा है. सो नाउ इट्स टाइम टू वर्क. ठीक है, पहले जो हमने रन करा था विदाउट इंटरनेट, तो उसने हमें मैसेज बॉक्स दे दिया था नो सो फॉर यू, विच इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर अ स्टूडेंट कि ठीक है इंटरनेट नहीं चल रहा, तो इसने एरर दे दिया, रन ही नहीं हुआ. अगर ये थोड़ा ट्रिकी मालवेयर होता तो इट वॉन्ट शो एनीथिंग. ठीक है, और कुछ शो नहीं कर रहा और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मतलब बैकग्राउंड में इसने कनेक्शन ट्राई कर लिया, पिंग करके देख लिया है, कुछ नहीं मिला इसे, तभी ये रन नहीं हुआ है. ठीक है, अब जब फेक इंटरनेट हमने चलाया यहाँ पे टूल्स, तो बेसिकली इसने सारे जितने भी फेक पोर्ट होते हैं प्रोवाइड कर दिए हमारी विंडो 10 को. अब क्या होगा, जब हम इसे रन करेंगे वी विल चेक. ओके, लेट्स, ओके वेट. सर ये जो आपने फेक इंटरनेट मिलाया है ये सेम विंडोज में भी काम करता है क्या? ये तो हमने काली में चलाया जैसे. हाँ, विंडो के लिए फेक इंटरनेट आता है, और आते तो दोनों के लिए, फेक इंटरनेट एंड आईनेट सिम दोनों सिस्टम के लिए आते हैं, बट आईनेट सिम यूजुअली इज रियली गुड फॉर द काली. ओके, फेक इंटरनेट जो होता है ना, वो इसमें भी चल जाएगा. जैसे आप देख रहे हो फेक इंटरनेट लॉग्स, इट विल प्रोवाइड यू लॉग्स आल्सो. सो आई एम नॉट गोना सजेस्ट दिस फेक इंटरनेट. ओके, fakenet.exe, विच, इसके अलावा आईनेट सिम बहुत बढ़िया है. ठीक है, फेक इंटरनेट समटाइम फेल मींस कि ये नहीं दिखा पाएगा कि लॉक्स वगैरह जनरेट करके, बट इट विल शोज अस एवरीथिंग. एंड ये यहाँ से क्लियर भी होता है कि हम वायरशार्क पे कैप्चर कर सकते हैं सारी चीजें. ठीक है, यहाँ से एक हमें पता चल जाएगा कि कनेक्शन इज गोइंग ऑन थ्रू बिटवीन आवर विंडो एंड द काली. कुछ भी अगर इंटरनेट बेस्ड सैंपल हम रन कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ डेटा पैकेट्स भेजेगा वायरशार्क के थ्रू. आई मीन नॉट वायरशार्क के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू. वो हम कैप्चर करना चाहेंगे वायरशार्क पे, राइट. तो कहीं ना कहीं तो कैप्चर करेंगे, तो दिस इज व्हाई वी बिल्ड दी स्निफिंग मशीन विच इज काली. ठीक है, ओके सर. ओके. सो ओके, अगेन वी गोना रन दिस थिंग. ओके, मैंने रन कर दिया. लेट मी जस्ट रन दिस एंड लेट्स चेक दिस टाइम इसने कुछ मैसेज बॉक्स देता है या नहीं देता है. लेट्स वेट फॉर 1 2 3 4 5 6 7. नो, इट्स नथिंग, कुछ नहीं आया. ठीक है, सो दैट मीन कुछ ना कुछ तो हुआ है. पहले इसने नो सुप दिया था, इस टाइम इसने नहीं दिया है. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन. सो क्या देख सकते हैं हम यहाँ से. ठीक है, यहाँ पे क्रिएट फाइल हो चुकी है, बंच ऑफ एपीआई पहले भी आए थे, बट इस बार मैसेज नहीं आया. दैट मीन समथिंग यूनिक गोइंग ऑन, समथिंग कुछ ना कुछ हुआ है. अब इसको अब हमने इस टाइम इंटरनेट कनेक्शन दे प्रोवाइड कर रखा है, विच इज फेक इंटरनेट आईनेट सिम. let's check this and we're gonna search for some URL, I guess. Let's check http dot request. okay, method check करते हैं. equal to let's take the get method, I guess this time. कुछ अगर get आया था, ठीक है. अब यहाँ मैंने get क्यों सर्च करा स्पेशली, बिकॉज ऑफ पी स्टूडियो कहाँ गया, पी स्टूडियो बंद कर दिया. वेट, पी स्टूडियो में हमारे पास गेट था, ठीक है, जो हमने देखा था, चेक करा था. आई होप यू गाइस रिमेम्बर. लेट मी जस्ट अगेन डू. हाँ, स्ट्रिंग को टाइम लगेगा लोड होने में. सो वहाँ पे स्ट्रिंग में हमें गेट दिख रहा था ना, कनेक्ट सेंड सेलेक्ट एंड देन गेट. हाँ सर देख रहा था. ओके, सो लेट्स चेक, लेट्स एग्जामिन दिस थिंग. okay, so we have lot of get. okay, http 1.1 1.1 गेट से हमें यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है http, but it's not showing us specially things, so we're gonna look for something else. frame contain देख लेते हैं.
frame contains okay and contains and let's see हमें .exe मिला था ना कुछ .exe कुछ मिला था. Let's check this. Okay, so as you can see .exe हमें कंटेंट मिल गया which is also HTTP using HTTP. अब यहाँ से यहाँ क्या क्लियर हो रहा है हमें, हमने स्ट्रिंग्स चेक करी थी रिमेम्बर. अब लेट्स चेक आवर स्ट्रिंग्स. ओके ms core lib ये रहा. ठीक है, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है ना. अब HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है बेसिकली, सो इट इज नेटवर्क बेस्ड. तो यहाँ से हमें एक नेटवर्क बेस्ड इंडिकेटर्स क्लियर हो गया है. सो हम बेसिकली क्या करेंगे अपनी रिपोर्ट में ये स्क्रीनशॉट लेके और जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है आई मीन ms core lib.exe और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी रिपोर्ट में बेसिकली लिख लेंगे. ठीक है, बेसिकली हमने एक अनदर सिग्नेचर हमने कंफर्म करा है. ठीक है, अब नाउ द थिंग इज लेट्स सी, इसको देखते हैं कर क्या रहा है ये. ओके, host get request, we also see that the get request and using http 1.1 हमने अपनी string में confirm करा था http 1.1. let's check http 1.1 and what else, connection keep alive, we also see this connection keep alive. okay, ठीक है, so ये clear हो गया. and next what else we have, the host serve dot okay serve1 dot ec2. okay, ये URL भी हमने कंफर्म करा था. लेट्स चेक. सो ये भी कंफर्म हो गया है राइट. एंड let's check another. It says the keep alive name http client 1.6 which is also a weird name for me. Name http client, that is the user agent. okay, so ये भी कंफर्म हो गया. ठीक है, सो दीज आर द कंफर्मेशन एंड यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा सबको और अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा जिससे कि आप एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार कर पाओ जब आप एनालिसिस कर रहे हो किसी भी सैंपल पे. ठीक है, सो दिस इज जस्ट एग्जांपल. जब आप रियल मालवेयर पे आप करोगे ना, रैंसमवेयर पे करोगे या फिर सेम फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो नाम क्लियर हो रहा है रैट डॉट अननोन, कोई भी अननोन नेम से कुछ भी सैंपल मिलेगा या वीडियो फाइल मिलेगी पीडीएफ मिलेगी. सो यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस. ठीक है, एंड यू हैव सबको ये जितने टूल है ना यूज करने आने चाहिए और यू हैव टू थिंक लॉजिकली कि हाँ क्या हो सकता है. लाइक यू नीड टू थिंक लाइक अ हैकर और एक चोर की तरह सोच लो कि अगर मैं होता तो क्या क्या करता. एक तरह से एक एल्गोरिथम बना लो अपनी खुद की कि पहले मैं क्या करता, अगर कनेक्शन लेना है तो मेरे को सेव भी कराना है, ड्रॉप भी कराना है, अगर कनेक्शन नहीं आया तो कुछ ना कुछ प्रोसेस. ठीक है, इस टाइप की अपनी स्मार्टली एक एल्गोरिथम बना लो, देन यू हैव टू प्रोसीड द थिंग्स. ठीक है, देन ये सब कुछ हम सीखते हैं जब हम क्लास लेते हैं ना. तो बेसिकली वहाँ पे हम बहुत ही डेप्थ में जाके हम सीखते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन आवर क्लास एंड ओके, यहाँ से कंफर्म हो गया ना, यूआरएल भी हमें कंफर्म हो गया विच इज EC2. ओके, सो नाउ यहाँ से सब कुछ कंफर्म हो गया. नाउ द थिंग इज कि ये करने वाला क्या है. ओके, यहाँ से तो कंफर्म हो गया, हमने सारे इंडिकेटर्स ले लिए. नाउ द फन पार्ट इज let me just minimize this thing. okay, and let it just open. and yeah, one more tool we're gonna run, that is the TCP view. TCP view हमारा क्या करता है, एक कनेक्शन बता देता है कि क्या कनेक्शन एस्टेब्लिश है नहीं है. so you can see here red dot unknown is listening on the port 55. it is listening somewhere, I don't know where. and we have the red dot unknown dot exe which is also mentioned listening on the local port here 50181. ठीक है, सो यहाँ से क्लियर हो गया कि हाँ एक रिवर्स शेल एक प्रोवाइड कर रहा है ओरिजिन को, राइट. सो दिस इज हाउ यू नीड टू एनालाइज द एंड कोई भी सैंपल है. ठीक है, अब एनालिसिस यहीं पे स्टॉप नहीं होती. इफ आई एम गोना डू द एनालिसिस प्रॉपर इट गोना टेक लाइक 4 to 5 hours. ओके, सो जो मेन मोटिव था वो ये था कि हाउ यू कैन एनालाइज अ रैट टाइप remote access trojan malware. okay, okay,
So just let me just check one more things. Okay. So आप लोगों को समझ में आया ना guys? यस सर समझ में आया. Okay, so drivers, let me just check. I'm just checking the things that gonna save time for us. If it's good, then good. Otherwise, okay, no. Okay, it's gonna take time. अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो बहुत time लग जाएगा. So I'm just gonna explain in theoretically. Okay, ठीक है कि basically क्या करने वाला है. हाँ, one more thing we skip the thing that is the that what is this. We're gonna check that thing. We're gonna copy that thing. Let's यहाँ पे हमें क्या मिलता है चेक करते हैं. Let me just paste and hit enter. Okay, it's gonna okay it's manually जाना पड़ेगा. Okay, so app data roaming and Microsoft users में जाना है. Okay, let's just go in the user. मेरा username. Okay, app data roaming Microsoft and Windows menu. Windows के बाद start menu, yeah, and then the programs. Let's check our startup. So here the file mscore.dll.exe, and which is it's not, this is the reflective name which we find in our Wireshark, but it write as in our system mscore dll dot I mean mscore dll.exe, which is host based indicators. Okay, so ये फाइल इसने यहाँ पे सेम ड्रॉप कर दी है. ठीक है, which is why we seeing the different name, because it's trying to bluff us. It's showing, okay, I'm gonna make you analyze me complicated. It shows a different name and it write with a different name, right? So we have another sample here, as you can see. Not the sample, I mean host based indicators, and you can take that, and once you run that thing, let's run, and it said this is the inet sim default GUI. So जब हमने रन करा तो ये हमें पूरे मालवेयर तो एग्जैक्टली सेकंड स्टेज हमें ड्रॉप हो गया, बट ये क्या कर रहा है, एक GUI, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ले जा रहा है और कनेक्शन बना रहा है. ठीक है, अब जब कनेक्शन बनाएगा वी हैव टू टेक द रिवर्स शेल थ्रू ये जो आईनेट सिम है ये रिप्लाई कर रहा है. ठीक है, अब आगे की प्रोसेस हम क्या करेंगे, एक रिवर्स शेल जनरेट करेंगे. उसके लिए वी नीड टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट एंड वी नीड टू ट्राई टू एग्जामिन इफ इट टेकिंग अ रिवर्स शेल, देन वी विल एनालाइज दैट कि हाँ हम रिवर्स शेल ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं. अगर लेता है तो वी विल सी लाइक व्हाट कमांड कैन आई फॉर यू. ठीक है, इसको हम कंफर्म करेंगे और इसको कंफर्म करने के लिए फिर हम ट्राई करेंगे सम कमांड इंजेक्ट करने की, देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स कम ऑन. ठीक है, क्लियर हुआ ना सबको कि हाउ यू कैन एनालाइज दैट थिंग. Yes sir. Okay, so this is how you can do the analyze when you really going to do a malware analysis in any company like Mindtree and Kaspersky. McAfee also can hire these things. Okay, so ये जितनी भी प्रोसेस मैंने बताई है स्टैटिक जो हमने डायनेमिक करा है, हाइब्रिड विच इज नॉट दैट रिलेवेंट बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशंस. ठीक है, ऑटोमेशन में क्या होता है कि ऑलरेडी स्टोर डेटा होता है और ऑलरेडी स्टोर डेटा क्या करता है वो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देता है कि हाँ कौन सी API कॉल्स और रजिस्ट्री कीज आर सस्पिशियस. ठीक है, एंड आई होप यू गाइज थिंकिंग अबाउट लाइक API कॉल्स क्या है, रजिस्ट्री कॉल्स क्या है. ठीक है, अब इन सब को जानने के लिए देन यू हैव टू जॉइन द क्लास बिकॉज वी गाइज नीड टू एनालाइज दिस थिंग एंड स्टडी DLLs, रूट किट क्या होते हैं, API रजिस्ट्री कीज का क्या इफेक्ट होता है,
एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एंट्री पॉइंट्स की क्या इंपॉर्टेंट है। पी व्यू में बहुत सारे टूल्स भी हैं, लाइक पी व्यू हो गया, ठीक है। डीबगिंग भी करते हैं हम कि हाउ वी कैन यूज द असेंबली कोड टू मेक अन कंक्लूजन कि हाँ बेसिकली ये मालवेयर और सैंपल कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है, ठीक है। सर इट्स अ पार्ट ऑफ थ्रेट हंटिंग। हाँ, थ्रेड हंटिंग, वी कैन से द थ्रेड। So the thread is a different, but not the different, but slightly different. When we talk about the thread and thread have a when we talking about the debugging, right? हम्म। Debugging contain the thread thread analysis. We can say that we are जब हम debugging करेंगे ना, then we can say yeah we are doing the thread analysis. तब हम एक एक thread को analysis करके देखेंगे basically इस process में क्या हुआ है, जब ये instruction pass हुआ है memory में, तो basically क्या value store हुई है, ठीक है। That call the thread analysis. Okay. सर हम क्या इसमें जो स्प्लंक और सिम का जो कंसेप्ट होता है वो भी करते हैं इस सेक में? Not really. No. That is the another department, like we can say the SOC, which is same and Splunk. वो डिफरेंट हो गया। वहाँ हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं लॉग्स की, राइट। जब हम आपको लॉग्स डिफरेंट मिलते हैं, देन द मालवेयर एनालिसिस विल कम, जो लॉग्स बने, क्या ड्रॉप हुआ है, राइट। सो उसके बाद फिर हम आते हैं। वो सॉक क्या हुआ, सिर्फ एक स्क्रीनिंग करता है बेसिकली सिम के थ्रू, और जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, हम्म। उसके थ्रू। सो सर इसमें जो सिम और इसका जो है इसमें मार्केट में क्या डिमांड है सर, इसका अभी कुछ है क्या इसका? हाँ, यू कैन टेक द एंट्री इन द सिक्योरिटी फील्ड वेरी इजीली थ्रू द सॉक। अगर आपको सॉक आता है ना, तो हम्म। आप बहुत इजीली एंट्री ले सकते हो सिक्योरिटी फील्ड में। नॉट दैट इजीली, बट यू हैव टू नो दैट थिंग। आपको आना चाहिए कि सॉक बेसिकली होता है क्या, सेम स्प्लंक यूज करने आने चाहिए, देन यू हैव टू टेक द एंट्री, ठीक है। सो सॉक के थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं, बट व्हेन इट कम टू द मालवेयर एनालिसिस, देन यू हैव टू बी रियली गुड व्हेन यू कम टू द एनालिसिस, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स। आपको थोड़ा असेंबली भी आनी चाहिए, लो लेवल लैंग्वेज, राइट। एंड यू आल्सो नीड टू बी फेमिलियर विद द रिवर्स इंजीनियरिंग अ बिट। एंड if we're talking about like logically, हाँ सोचना तो logically पड़ेगा जब malware analysis आया, बट आई एम श्योर जब malware analysis की जॉब होती है, दैट इज pretty good। जो पैकेज मिलता है आप लोगों को, दैट इज गोना बी impressive। सर व्हाट लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड? लैंग्वेज तो कोई सी रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए, बट इफ यू, हाँ सॉरी लैंग्वेज की बात कर रहे थे आप, दैट इज असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली। assembly language, let me just if I can, okay, yeah, okay, let me just show you how it looks like. Okay. Okay, this is the assembly language basically. How you can read this language. So इसके बारे में थोड़ा familiar होना पड़ेगा जब आप माल एनालिसिस करोगे। That is also I'm gonna teach you how you can be familiar with that thing, ठीक है। Any व्हाट इज द query? व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर दिस लैंग्वेज सर? इस लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के लिए, हाँ हाँ। it's depend on you basically, Pawan. And if you're really interested to study about the assembly, it will take. It's to be honest, totally depend on you. Like, अगर आप explore करने बैठ गए, then it will take maybe 2 months, 3 months, who knows. But अंडरस्टैंडिंग इजिली आ जाएगी विद इन आई गेस 1 month, कि हाँ बेसिकली क्या चल रहा है, कि ये इंस्ट्रक्शन के मतलब क्या होते हैं, जब ये आर्गुमेंट पास हो रहा था बेसिकली, हाँ कहाँ से होगा, कौन से स्टैक में सेव हो रहा है, एलोकेशंस क्या होंगी, ठीक है, फ्लैग्स